All right. Today we will starting with the chapter of reversible reactions. What is the meaning of the term reversible reactions? Can you tell me? Reversible reactions are those that, when they change into another state, we can bring them back to their original state. Exactly. Good. For example, अगर आपके पास reactants products में बदल गए, you can reverse the reaction as well, and products can also be broken down back into the reactants. Some reactions go to completion where the reactants are used up to form the product molecules, and the reaction stops when all of the reactants are used up. In reversible reactions, the product molecules can themselves react with each other or decompose to form the reactant molecules once again. अगर आपका रिएक्शन A plus B मिलके C बना रहा था, this C can also break down back into A and B as well. So it is said that the reaction can occur in both directions, and the forward reaction which forms the products and the reverse reaction which form the reactants दोनों आपके पास at a time भी हो रहे होते हैं. When writing a chemical equation for reversible reaction, two arrows are used to indicate एक इस तरह वाला और एक इस तरह वाला. Two arrows are used to indicate the forward and the reverse reactions. Each one is drawn just half arrowed, and the top points to the right and the bottom one points to the left. For example, ये आपके पास वो reversible वाला arrow है. इससे ये पता लग रहा है that nitrogen and hydrogen are combining together to Mm. form ammonia in the forward direction, but in the backward direction, the ammonia decomposes or breaks down into nitrogen and hydrogen. Is it clear? Yes. This is what we call as the Haber's process as well, और Haber's process भी आगे जाके आपके बहुत सारे और रिएक्शंस में आने. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स और अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है? What's the difference between these two terms? लाइक जो हाइड्रेटेड होते हैं हम वाटर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, एंड जो एनहाइड्रेटेड होते हैं वो लाइक ड्राई होते हैं. एग्जैक्टली, मैं कहूँ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये है. बट अगर इसको मैं बोलूँ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो ये क्या बन जाएगा? .H2O लगा दो आगे. इस .H2O को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Hydrated salts are the salts that contain water of crystallization, which affects their molecular shape and color. Water of crystallization is the water that is stoichiometrically included in the structure of some salts during crystallization process. A common example is copper 2 sulfate, which crystallizes forming the copper 2 sulfate pentahydrate. Clear हो गया? This water of crystallization is indicated with a dot written between the salt molecule and the surrounding water molecules. Anhydrous salts are those that have lost their water of crystallization, usually by heating, in which the salt becomes dehydrated. हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट जो है, अब आप इसको वापस एनहाइड्रस में कैसे बदल सकते हो? बाय रिमूविंग वाटर. और रिवर्स डायरेक्शन में एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट विल रिएक्ट अगेन विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट. तो ये भी आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. बाय द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ वाटर यू कैन मेक इट अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज वेल. अब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक है, where the hydrated copper 2 sulfate is being heated, और वो कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में. लेकिन जब आपको हीट एनर्जी रिलीज करके होता है बैकवर्ड रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? where the anhydrous copper 2 sulfate and water are together, not breaking, but they are now forming back what? Hydrated copper sulfate. This is also used as a test for water. एक तो आपको फिजिकल टेस्ट पता है ना पानी का, कि आप बॉयल करके देख लें इफ इट इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस और नो. लेकिन केमिकल टेस्ट फॉर वाटर है कि अगर आप इसमें पानी डालोगे, आप एनहाइड्रस कॉपर ले लो, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले लें, और उसमें आप पानी डाल के ऐड करें, आपको किसी ने ला के दिए कि प्योर वाटर है या नहीं है, आप वाटर ऐड करोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा एकदम से? ब्लू. दिस इज अ केमिकल टेस्ट फॉर वाटर एज वेल. यहाँ तक क्लियर हो गया? इज इट ऑल क्लियर? So, when anhydrous copper 2 sulfate crystals are added to water, they turn blue and heat is given off. This reaction is reversible. When copper 2 sulfate crystals are heated in a test tube, the blue crystals turn into a white powder and a clear colorless liquid rests on the top of the tube. ये जो ब्लू कलर के कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, दे आर नोन एज
hydrated copper 2 sulfate because they contain water of crystallization. When hydrated copper 2 sulfate is heated, it loses its water of crystallization and turns into anhydrous copper 2 sulfate. तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, दिस इज योर एंडोथर्मिक, और जिसका बैकवर्ड रिएक्शन है फिर कॉपर 2 सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर अगेन टू फॉर्म हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर होता है वाइट, और आप इसको एज ए टेस्ट फॉर वाटर कब यूज कर, जब आप इसके अंदर वाटर ऐड करोगे तो ये ब्लू कलर का हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट बना देगा। दिस इज अ केमिकल टेस्ट फॉर वाटर एज वेल, पेपर 6 के अंदर आता है। हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड, और ये आपके पास वो रिएक्शन यू कैन सी, आपके पास दिस इज द रिवर्सिबल एरो दैट इज शोइंग इट एज वेल। पिंक कोबाल्ट क्लोराइड का भी कुछ सिमिलर रिएक्शन होता है। हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड ब्रेक डाउन होगा किसमें? एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड में, और एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड कैन अगेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड। यू कैन सी हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड का कलर क्या होगा? पिंक। और एनहाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड का जो कलर है दैट इज ब्लू। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर वाटर। हाइड्रेटेड टू एनहाइड्रस जाने में आपको वाटर ही लूज करना पड़ा, तो आप हीट करते तो इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट वापस वाटर ऐड करना है अगर आपने एनहाइड्रस कॉपर कोबाल्ट 2 क्लोराइड में, तो यू विल हैव टू ऐड वाटर एंड दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी एज अ केमिकल टेस्ट फॉर वाटर यूज हो सकता है। अगर आप एनहाइड्रस ब्लू कलर का कोबाल्ट 2 क्लोराइड ले रहे हो और उसमें आप वाटर ऐड कर दोगे, द कोबाल्ट 2 chloride is going to turn into pink. When anhydrous blue cobalt 2 chloride crystals are added to water, they turn pink and the reaction is reversible. When these cobalt 2 chloride crystals are heated in a test tube, the pink crystals turn back to blue color again. And the form of cobalt 2 chloride in crystals is pink is known as hydrated cobalt 2 chloride. तो hydrated वाला pink है, anhydrated वाला blue है। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहां पे आप देख सकते हो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके पास 6 है यहाँ पर। इज इट क्लियर? यस। Moving on to equilibrium and Le Chatelier's principle. What do you understand by the term equilibrium? इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट लाइक स्टेबल होता है। किस तरह स्टेबल होगा, कौन सा वो पॉइंट होगा? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल हो गई है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द products में। And we have seen that the reversible reaction is the one that occurs in both directions, and when during the course of reaction the rate of forward reaction equals to the rate of reverse reaction, और हम उसको कहते हैं कि ये एक स्टेट ऑफ क्या है? इक्विलिब्रियम। इसको पेपर में डायनामिक इक्विलिब्रियम करके भी सवाल आया हुआ है, दैट डिफाइन द टर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो उसका भी आंसर क्या है? when the rate of forward reaction is equal to the rate of the backward reaction या reverse reaction। clear? यस। It is the dynamic equilibrium that the molecules on the left and right of the equation are constantly changing into each other by chemical reactions at the same rate. The concentration of reactants and products will remain constant given that there is no other change made to the system. तब तक रिमेन कांस्टेंट रहेंगे जब तक आप कोई और चेंज नहीं करते सिस्टम में, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया। वो ये कंडीशंस है दैट विल ऑब्वियसली चेंज द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, या तो रिवर्स की तरफ या फिर फॉरवर्ड की तरफ। ये हैं वो तीन कंडीशंस, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं। It only occurs in a closed system that none of the participating chemical species are able to leave the reaction vessel. ओपन सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने लिड यहाँ पे नहीं लगी हुई, ओपन सिस्टम है जी, कि यहाँ इर्द गिर्द जो भी आपके पास एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो कुछ भी है, दे आर ऑल्सो कैन रिएक्ट विद ओपन सिस्टम, वेयर एज अ क्लोज सिस्टम हैज अ लिड ओवर इट एज वेल। और हम क्लोज सिस्टम वाले को मान सकते हैं पक्का पक्का कि हाँ ये आपके पास क्या है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, वरना ओपन तो एक वन साइडेड हो जाएगा बिल्कुल। तो इट्स ऑलवेज सपोज टू बी अ क्लोज्ड सिस्टम, ये पहली कंडीशन होती है। When the nitrogen and hydrogen are present in the beginning of the reaction, ये हेबर्स प्रोसेस की बात करें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन when they are present at the beginning of the reaction, the rate of the forward reaction will be the highest, क्योंकि अभी तक अमोनिया बना ही नहीं है ना, अभी तो अमोनिया बन रहा है। तो सारा रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? फॉरवर्ड में। और रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे ज्यादा हाई कहाँ होगा? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इट वुड बी द हाईएस्ट, सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है
तो जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है ना, और बिल्कुल शुरू में रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है। तो हमेशा रेट किस तरफ जाएगा, फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशंस में आपके पास जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा वो फेवर होगा। सो दैट इज व्हाई एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ग्रेजुअली डिक्रीज। कोई भी रिएक्शन कब प्रोसीड करता है, जब आहिस्ता आहिस्ता आपके पास खाने बनाने के इंग्रेडिएंट्स कम हो जाएंगे लेकिन खाना बनता जाएगा। हर रिएक्शन में यही होता है कि रिएक्टेंट्स हमेशा कम होंगे और प्रोडक्ट्स हमेशा ज्यादा होते जाएंगे। यही प्रूफ होता है कि हाँ एक रिएक्शन हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन। इज इट क्लियर? यस। अब आहिस्ता आहिस्ता अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। तब होगा क्या कि जब अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन भी एक लिमिट तक बढ़ जाएगी, अब आपके पास रिएक्शन किस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड भी होना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड तो हो ही रहा था। फॉरवर्ड कब हो रहा था, जब ये बहुत ज्यादा थे, ये बना ही नहीं था। अब NH3 भी बन गया है और अब वो कम होते जा रहे हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। सिंस इन दीज टू रिएक्शंस आर इंटरलिंक्ड एंड नन ऑफ द गैस कैन एस्केप, वी से कि आपके पास यहाँ भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट रीच हो चुकी है, वेयर वी सेड दैट द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। इज इट क्लियर? लेकिन स्टार्ट यस। में हमेशा फॉरवर्ड पहले ज्यादा होता है। ये देखिए, रेट अगर आप देखो तो फॉरवर्ड रेट जो है वो शुरू में मैक्सिमम था और बैकवर्ड रेट जो था वो तो जीरो था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखा कि रिएक्टेंट्स भी कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरवर्ड के रेट था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज्ड एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। फॉरवर्ड रिएक्शन में कि जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन थे ये मिलके जी अमोनिया बना रहे थे। अब जब अमोनिया पता लगा कि बहुत ज्यादा बन चुकी है, अब अमोनिया भी आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड में नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोबारा बनाना शुरू होगी, एंड दिस इज दैट स्टेट वेयर द इक्विलिब्रियम वाज रीच्ड। एंड व्हाट डज डायनामिक इक्विलिब्रियम टेल्स us दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिसाइड करेगी हमेशा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट्स की तरफ है, इसका मतलब क्या हो कि प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड मोर। अगर इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में कहूँ कि लेफ्ट की तरफ है, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट ज्यादा बन रहे होंगे। सो व्हेन द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, इट मीन्स दैट द concentration ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीजिंग, नाउ रिएक्टेंट बढ़ेगा। बट इफ द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट, दिस मीन्स दैट द concentration ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। कैटलिस्ट हमने जो पढ़ा था, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? हमारे जो हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना। उसको इंक्रीज करना, उसका रेट ऑफ रिएक्शन। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कहाँ से आएगा? रेट। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल इज दैट, ठीक है। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग व्हाट, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। गॉट इट? यस। याद रहे कि कैटलिस्ट ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर आप कैटलिस्ट बढ़ा भी दोगे एक सिस्टम में, वो तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए दोनों के लिए इक्वली ही बढ़ेगा। तो बात तो वही होगी कि अगर आप दोनों साइड पे इंक्रीज कर रहे हो, हाँ स्पीड जल्दी हो जाएगी रिएक्शन की, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नेवर अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। आप देखो कि जब आपने कैटलिस्ट डाला इक्विलिब्रियम में, तब भी उसी टाइम पे रीच हुआ था, ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट डालने की वजह से इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, वो बस रीच जल्दी हो गया। करेक्ट? पहले यहाँ पे रीच हो रहा था, अब इक्विलिब्रियम कब रीच हो गया, थोड़ा सा पहले रीच हो गया। दैट इज इट। Catalyst only affects the speed or the rate of the reaction. It never interferes with the position of equilibrium. Position of equilibrium अगर कोई affect करेगा वो क्या है, pressure, concentration and temperature. Le Chatelier's principle states that when a change is made to the conditions of a system at equilibrium, the system automatically moves to oppose the change. This is the definition you will write when you are asked about Le Chatelier's principle. The principle is used to predict the changes to the position of equilibrium when there are changes in temperature, pressure या फिर concentration. सबसे पहले हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं, the effect of temperature. ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे देखेंगे, लिसन केयरफुली। मैं दोबारा से हेबर्स प्रोसेस की इक्वेशन लिख रहा हूँ। N2 + H2 फॉर्म्स व्हाट, NH3। ये इक्विलिब्रियम है ना, ठीक है, ओके। नाउ जो हेबर्स प्रोसेस है इसका जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज -68।
-68 से क्या लग रहा है कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? नेगेटिव वाला जो होगा वो क्या होता है हमेशा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ठीक है। मतलब कि हमें ये बात पता लग गई कि जो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब ये है कि जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो क्या होगा? एक्सो एंडो एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक। अब अगर मैं इस सिस्टम का, ये तो हमने डिसाइड, पहले आपने क्या डिसाइड करना है कि ये फॉरवर्ड कौन सा है और बैकवर्ड कौन सा है। आपको जो एंथैल्पी चेंज दिया होता है यहाँ पे, ये हमेशा किसका दिया होता है? फॉरवर्ड का। ठीक है। तो अगर आपको फॉरवर्ड का यहाँ से पता लग जाएगा तो बैकवर्ड उसका उल्टा हो जाएगा। अब मैं सिस्टम के अंदर चेंज क्या लाऊंगा कि मैं जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दूंगा। अब याद रहे, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स द एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा साइड फेवर होता है? एंडोथर्मिक। तो मेरा इक्विलिब्रियम की पोजीशन एंडोथर्मिक। लेफ्ट मूव कर जाएगी या राइट पे? लेफ्ट मूव कर जाएगी। लेफ्ट मूव कर जाएगी। और इसका मतलब भी, क्योंकि लेफ्ट वाला रिएक्शन क्या था? बैकवर्ड रिएक्शन वाज एंडोथर्मिक। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं कहूँ कि आई हैव डिक्रीज द टेम्परेचर, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर जो होता है दैट ऑलवेज फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब आप इस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया दैट मींस दैट मोर NH3 विल बी प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? यस। गुड जॉब। ये वही चीज है सारी। अच्छा, प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है? दोबारा से अगर मैं आपके लिए हेबर्स प्रोसेस की इक्वेशन लिख दूं, व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ हेबर्स प्रोसेस? 2NH3। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि लेफ्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? हाउ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? एक ये 1 और एक ये 3, कितने हो गए? 3। 4। 4। और राइट साइड पे कितने हैं? 2। 2 हैं। अब एक चीज याद रखें, इंक्रीज इन प्रेशर विल ऑलवेज शिफ्ट इन द डायरेक्शन विद द स्मॉलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जो डिक्रीज इन प्रेशर है वो कहाँ पे शिफ्ट करेगा? हमेशा उस साइड पे जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब आप मुझे बताओ, जब मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? बढ़ा दें तो फिर वो राइट साइड की तरफ से जाएगा। क्योंकि राइट साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आपके पास अमोनिया ज्यादा हम्म। फॉर्म होना शुरू हो जाएगी बिकॉज इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द राइट। और जब मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूंगा देन डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड पे, सिंपल, वो लेफ्ट पे मूव हो जाएगा, जिसका मतलब है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अब ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी एक एग्जांपल देखें, राइट साइड पे 1 मोल है, लेफ्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, तो डिक्रीज इन प्रेशर राइट पे जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम पर लेफ्ट पे चला जाएगा। इज इट क्लियर? जी। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन का बहुत सिंपल सा है, एक गेम खेलते हैं, ये देखो। A+B फॉर्म्स C+D। ठीक है। अगर मैं ए बढ़ा दूंगा तो कम कंसंट्रेशन कहाँ पे हो गई है? राइट पे। क्योंकि अगर ए बढ़ा दिया तो बैलेंस करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? राइट साइड पे। एग्जैक्टली, फॉरवर्ड पे। अच्छा, अगर मैं सी ज्यादा कर दूं तो राइट साइड तो ज्यादा हो गई, तो मुझे बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम को लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। क्लियर? जी। अच्छा, अगर मैं बी कम कर दूं तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? तो फिर इक्विलिब्रियम राइट साइड की तरफ वापस चला जाएगा। बी कम हो गया, बी ज्यादा नहीं हुआ, बी के साथ बुरा हुआ है, तो हाँ इक्विलिब्रियम तो लाइक पास आएगा। वो वापस ए साइड पे वापस आ जाएगा अपनी यस। लेफ्ट साइड पे। अगर मैं डी भी कम कर दूं तो भी जिसके साथ बुरा हो रहा है उसके पास आएगा इक्विलिब्रियम। हाँ, लेकिन अगर मैं डी ज्यादा कर दूं तो अब ए और बी के साथ नाइंसाफी है, तो इक्विलिब्रियम उधर चला जाएगा। समझ आ गया?
Simple. This is the effect of concentration on the position of equilibrium. Got it? ये सारा वही है. End of your equilibrium reversible reactions chapter. La Chatelier's principle में कौन सी चीजें आती हैं जो अफेक्ट करती हैं? टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर. गॉट इट? मैं एक दो वीडियोस देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एज वेल. Listen very carefully, then I'll ask you some questions as well. The stresses are changes to the concentration of either the reactants or products, changes to the pressure, although this is only applicable to gaseous systems, changes to the temperature. Let's examine a hypothetical reversible reaction at equilibrium where reactant A reacts with reactant B to form product C and product D. If we added more A and B, the system becomes stressed and is no longer at equilibrium. To counteract the stress, the system forms more C and D in order to remove the excess A and B. The equilibrium, therefore, shifts to the right. If we added more C and D, the system becomes stressed and is also no longer at equilibrium. So to counteract the stress, the system forms more A and B. Therefore, the equilibrium shifts to the left. What happens if we remove C and D as they are being produced, or if the concentration of C and D is decreased? Please pause the lesson to think about this and resume when you are done. The system is now stressed and no longer at equilibrium. To counteract the stress, more C and D are produced, so equilibrium shifts to the right. When concentration increases, equilibrium shifts to the opposite side of the reaction. When concentration decreases, equilibrium shifts to the same side of the reaction. Changes in pressure. The stress to a system at equilibrium is only applicable to gaseous systems. For this stress, we will examine another hypothetical reaction at equilibrium, where reactant A reacts with 2 moles of reactant B to form product C and product D. An increase in pressure means that there is a decrease in volume, so there is less space. Equilibrium will shift to the side of the reaction with fewer moles. In our example, an increase in pressure will cause equilibrium to shift to the right, since there are fewer moles, 2 moles compared to 3 moles on the left. A decrease in pressure means that there is an increase in volume, so there is more space. Equilibrium shifts to the side with more moles, so in our example, equilibrium shifts to the left. So an increase in pressure favors the side with fewer moles, and a decrease in pressure favors the side with more moles. In our next lesson, you will learn about how a system works to restore equilibrium in response to changes in temperature. In summary, Le Chatelier's principle states that when a system at equilibrium is stressed, the system works to restore equilibrium. Lily. System at equilibrium responds to changes in temperature. Le Chatelier's principle states that a chemical system at equilibrium always works to restore equilibrium when it is stressed. To consider what happens to a system at equilibrium when temperature is changed, you must first consider the energetics of the reaction in question. If the forward reaction is exothermic, then the reverse reaction must be endothermic. Let's examine this hypothetical reaction where reactant A
reacts with reactant B to produce product C and product D, with a change in heat of minus 75 kilojoules. This means that when the forward reaction occurs, 75 kilojoules of energy is released and 75 kilojoules is absorbed when the reverse reaction occurs. So an increase in temperature would mean that the endothermic reaction would be favored to remove the excess heat, therefore counteracting the imposed stress. Decreasing the temperature would cause the system to produce more energy, therefore the exothermic reaction would be favored. The dimerization of nitrogen dioxide to dinitrogen tetroxide is an exothermic reaction. Nitrogen dioxide is a brown gas, whereas dinitrogen tetroxide is colorless. What observations do you think can be made when the temperature is decreased? How about when the temperature is increased? Please pause the lesson to think about this and resume once you are done. A decrease in temperature favors the exothermic reaction, so more dinitrogen tetroxide is produced. Since it is a colorless gas, the mixture should appear paler. An increase in temperature favors the endothermic reaction, so more nitrogen dioxide is produced. The mixture should therefore appear darker brown. Addition of a catalyst does not affect the position of equilibrium as it increases the rate of both the forward and reverse reactions. It only quickens the attainment of equilibrium. Let's return to the example of you digging a hole and your friend refilling it while you dig. Imagine that you are both given much larger shovels. The size of the hole still remains constant, but with each dig or fill, more soil is removed or filled. In conclusion, when the temperature of a system at equilibrium is increased, the endothermic reaction is favored. When the temperature of a system at equilibrium is decreased, the exothermic reaction is favored. Adding a catalyst has no effect on the position of equilibrium. All right, clear हो गया Le Chatelier's principle? जी. Can you tell me what is Le Chatelier's principle? What do you think? If you're wondering how I scored top essay marks like Le Chatelier's principle हमें क्या बताता है? जी. That how are the different factors such as temperature, concentration, and pressure affecting the position of equilibrium. Got it? ये चीज बताता है. जी. ठीक है. Good. How do we define the term dynamic equilibrium? जी. What the definition of dynamic equilibrium की definition क्या है? कब होता है? किधर गायब आज? When the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. Got it? Now listen to this very carefully. This is the last summary. I'll be asking you questions. In today's video, we're going to look at reversible reactions and see what we mean by the terms equilibrium and the position of equilibrium. Now, most chemical reactions look something like this, with the arrow in the middle pointing to the right, to indicate that the reactants can turn into the products. This means that it's a one-way reaction. Once the carbon dioxide is formed, it won't break back down into carbon and oxygen. In other reactions though, like this one here, we have a double arrow, which tells us that the reaction is reversible. The top arrow tells us that ammonium chloride can break down into ammonia and hydrogen chloride, which we call the forward reaction, while the bottom arrow tells us that the ammonia and hydrogen chloride can also combine to reform the ammonium chloride, which we call the backward reaction. So because both of these can happen, we call it a reversible reaction. Now, the important thing to understand is that the forward and backward reactions can take place at different rates. At the beginning of the reaction, there'll be loads of ammonium chloride, but no ammonia or hydrogen chloride.
So the forward reaction will be really fast, but the backward reaction won't have started yet. As the reactants turn into products though, the forward reaction will slow down and the backward reaction will speed up. After a while, the rate will even out, and the forward and backward reactions will be going at exactly the same speed. At this point, the concentrations of the reactants and products won't change anymore, so we can say that the reaction is at equilibrium. So to clarify, at equilibrium, both reactions are still happening, but they effectively cancel each other out. So there's no overall change in the concentrations of the reactants or products. Of course, in reality, the molecules are still breaking down and reforming, but because they do so at the same rate, there's no overall change in the concentrations. Now, something to point out here is that just because the concentrations of the reactants and products are constant while at equilibrium, does not mean that they're the same as each other. For example, there could be lots of ammonium chloride and only a small amount of ammonia and hydrogen chloride. Or there could be lots of ammonia and hydrogen chloride, but only a small amount of ammonium chloride. In either case though, as long as the forward and backward rates are the same, then the reaction would still be at equilibrium. However, what would change when we have these different concentrations is the position of the equilibrium. When there are more products, like this, we would say that the equilibrium lies to the right. But if we had more reactants and fewer products again, then we'd say that the equilibrium lies to the left. This position of equilibrium can change depending on the conditions. For example, adding heat to this reaction encourages the forward reaction, meaning we'll have relatively more products, as the position of equilibrium moves to the right. On the other hand, if we cool the conditions of our reaction, it would push the position of equilibrium back to the left, so it would have more ammonium chloride again. Regardless of its position though, equilibrium can only be reached if the reversible reaction is done in a closed system, which means some kind of sealed environment from which none of the reactants or products can escape. Because if the products kept escaping, it would never reach equilibrium. The last thing we need to cover is that reversible reactions are always exothermic in one direction and endothermic in the other. For example, in this reaction, which shows the thermal decomposition of hydrated copper sulfate to anhydrous copper sulfate and water, the forward reaction is endothermic, and so the backward reaction is exothermic. If you're not familiar with these terms, hydrated just means that water is present, and anhydrous means that there's no water. Now, because the forward reaction is endothermic, it requires heat energy from the surroundings to work. So if we were to heat some hydrated copper sulfate, which exists as blue crystals, it will drive the reaction to the right, which evaporates off the water and leaves white anhydrous copper sulfate powder. If we then took away the heat and added some water to this powder though, it would drive the backward reaction, so the equilibrium would shift to the left and reform our blue crystals of copper sulfate. And because this reaction is exothermic, it would re-release all of that energy it had just absorbed in the forward reaction. So to quickly recap everything, reversible reactions are those with a double arrow in the middle, which shows that they can react in both the forward and backward directions, one of which will have to be exothermic, and the other endothermic. And if these two rates are the same, then we say that the reaction is at equilibrium, and the concentrations of the reactants and products will remain constant. The position of equilibrium can change though, and will shift to the left or the right depending on the conditions. Anyway, that's all for today, so hope you enjoyed it, and Clear हो गया? Everything about equilibrium done? जी Good job.